Welcome back to my YouTube channel Medical Classes by Dr. Srinidhi Kumar Acharya. Don't forget to subscribe to my channel and also please give your valuable comments. You can also visit the playlist. In the playlist we have provided almost all the topics so far we have discussed in a very systematic order. So that is quite convenient for your study, continued study. So thank you very much. You can make use of it also. Anyway, in the last class we are discussing about bone age. Now, how to take the bone age and what are the criteria, so that part we have already completed. Now if you are plotting the bone age in the chart, then 2HD or below 2HD or above 2HD means it is quite significant. Now let us see in detail. So these methods we have seen, what are the different charts which are used for skeletal age. Now when the bone age measurement is significant, okay, what is the significance of bone age measurement? So if the bone age is more than 1 year compared to that of the chronological age, may be there, or suppose the child age is 3 years, chronological age is 3 years and the bone age is 2 years, so then it is significance. Okay, so if the difference is, this part also we have covered in the last class, if the difference is 1.5 years, in between 4 to 12 years, it is significant. If the difference is more than 2 years, the age group is more than 12 years, so then also it is significant. So whatever method that you follow, but never go by the carpal bone calculation, that is not the accurate method. Okay, it is not precise method. So in a short stature child, the bone age may be normal, delayed or advanced. Now we have to see what are the conditions. Okay, usually the advanced bone age may be seen in case of hypothyroidism, etc. Now, if you are plotting on the chart, then 2HD or below 2HD or above 2HD means it is always significant. Okay, or 20% above or below the chronological age is also significant. This is another criteria of the bone age. Okay, so by the Tanner-Whitehouse method, when we compare, usually the Tanner-House method is quite good for the suited for the Western kids compared to the Indian kids. If the Indian kids, if there is 1 year delay compared to the Western kids, so that means if you follow the Tanner-House method for the calculation of the bone age, there is a 1 year delay. That means that should be taken as normal compared to the Western kids. In Indian kids, there will be 1 year delay, and that 1 year delay should be considered as normal as far as the Indian situation is concerned. So bone age will be affected in almost all the chronic systemic disorders. It does not mean that a normal bone age will exclude them. Okay, so that means usually in all the chronic disorders the bone age will be get affected. Okay, that means according to the chronological age, your bone age is not going. Okay, because that is because of the chronic disorders. But if it is not there, it does not exclude the other problems. That means it does not always suggest that it is a normal bone age. Okay, so if at all the bone age is normal, the chronic systematic disorders or genetic disorders are unlikely, but it is not impossible. So this is another important thing. Suppose bone age is normal, then we cannot 100% we can assure that there is no chronic disease. No, it is not like that. Okay, or we cannot assure that 100% there is no genetic disorder. It is also not like that. The variations are there. So in the previous case, we are discussing the bone age is 7 years. The chronological age is also 7 years. The height is almost all okay, maybe slightly less. So it may be a case of familial short stature. Now we will look into this relationship between all these three ages. Okay, what is the relationship between all these three: bone age, chronological age, height age, etc. Any height which is less than the chronological age is called as chronological. Any height which is less than the chronological age is considered as a short stature. Okay. Now bone age may be normal, bone age may be advanced, bone age may be delayed compared to the chronological age. Now we have to make the interpretation. If there is a short stature but normal bone age is there, see, understand very carefully, there is a short stature but bone age is normal. Okay, according to the chronological age, the bone age is normal. ठीक है, 10 साल का बच्चा है, शॉर्ट स्टेचर में है, 10 साल में उसका कितना बोन का एज होना है उतना एज है, बट वो शॉर्ट स्टेचर में है, बट उसका बोन एज उसका 10 साल के हिसाब से है. सो देन वी विल कॉल इट एज बोन एज इज नॉर्मल फॉर द एज, एंड दिस टाइप ऑफ फाइंडिंग इज यूजुअली सीन इन केस ऑफ फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर.
इफ देर इज ए शॉर्ट स्टेचर एंड देर इज एडवांस्ड बोन एज, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर इज देयर, 10 साल का बच्चा है बट उसका बोन एज को आप देखेंगे वो 12 साल का बोन एज है, सो दैट इज ऑलवेज सजेस्टिव ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, स्पेशली इन फीमेल, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी लाइक hypothyroidism may be the cause. So if there is a short stature with a delayed bone age, okay, so one is normal bone age that we have seen, usually seen in familial, advanced usually seen in precocious puberty, and delayed bone age, ठीक है, 10 साल का बच्चा है, बोन एज उसका 7 साल का है या 8 साल का है, देन मे बी एवरीथिंग एल्स, ठीक है, तो दैट मीन्स अब ये क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हो सकता है, इट मे बी द क्रॉनिक डिसऑर्डर्स. सो दिस इज हाउ वी हैव टू इंटरप्रेट द बोन एज. So any chronic disorder will reduce the weight more than the height. Usually जब भी कोई भी chronic disorder होता है, height is not much affected, that is actually the weight is mostly affected. Height is also affected in chronic malnutrition and all, okay, it is also affected. Any chronic disorder will first reduce, दोनों कम हो जाता है, पहले कौन सा कम हो जाता है, any chronic disorder will first reduce the weight more than the height except few of the conditions. What is that? Endocrine conditions. Okay, now this is very important. Short stature is there, height is more than the weight is more than the height. Okay, so where weight for the age can be normal or even more, so that's suggested, that means a patient is there with a short stature. Okay, height is more than the weight is more than the height. Now you should always think about the endocrinal problems. In endocrinal problems, height को कंपेयर करते हुए वेट उसका ज़्यादा है, हाइट से ज़्यादा उसका वेट है. ओके, हाइट तो कम है, शॉर्ट स्टेचर में ही है मान लो, बट उसका वेट है ना, उस हाइट से हाइट का कंपैरिजन में, वो जो अभी बच्चे का हाइट है उसके कंपैरिजन में उसका वेट बहुत ज़्यादा है. सो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट सजेस्ट टुवर्ड्स सम ऑफ द एंडोक्रिनल प्रॉब्लम्स. सो कंपेयर टू द क्रोनोलॉजिकल एज, हाइट इज लेस, दिस इज शॉर्ट स्टेचर, बट कंपेयर टू द हाइट, वेट इज इवन मोर less or affected. This is the second situation I am telling. First situation I told, short stature is there, height is more, short stature is there, height is less, weight is more, endocrinal problems. Second situation, compared to the chronological age, height is less, उस chronological age के हिसाब से height is less, okay, he is in short stature, okay, but now compared to the height, उसका जो height है 10 साल में, उसका जो हाइट है वो कम है, उस हाइट के कंपैरिजन में उसका वेट और ज़्यादा कम है, ठीक है. नाउ दिस विल नॉट पॉइंट टुवर्ड्स द एंडोक्राइनल कंडीशन, दिस विल पॉइंट टुवर्ड्स माल न्यूट्रिशन. ओके, सो दिस विल पॉइंट टुवर्ड्स माल न्यूट्रिशन. सो दिस इज वन कंडीशन वेयर बोन एज इज माइल्डली रिटार्डेड, क्योंकि माल न्यूट्रिशन चल रहा है, सो बोन एज इज माइल्डली रिटार्डेड. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स very well. Now what is the relationship between all these three ages? Again we will continue. Suppose we have a child, height is more, weight is more, height is also more, weight is also more, but not as much as height compared to the chronological age. Try to understand the situation. Height is more, ठीक है, weight is also more, okay, but not as much as height compared to the chronological age. 10 साल में उस बच्चे का जितना वेट हाइट होना है, ठीक है, 10 साल में जितना हाइट होना है उतना नहीं है. दैट मीन्स हाइट इज मोर, वेट इज ऑल्सो मोर, बट 10 साल में जो हाइट है उसका आना चाहिए, उस हाइट के लिए जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं है. बट द इनिशियल ग्रोथ स्प्रुट of precocious puberty will looks like this, and there will be a significant advancement in the bone age. This is one situation. Okay, now I will explain. Usually this type of presentation will be seen where initially जो है बच्चे का ग्रोथ स्प्रुट अच्छा था, उसका ग्रोथ अच्छे से चल रहा था, और बीच में कुछ प्रॉब्लम हो और उसके बाद उसका ग्रोथ रुक गया. सो देन वी विल हैव दिस कंडीशन, हाइट इज मोर, weight is also more, but not as much as height compared to the chronological age. उस chronological age में उसका हाइट कितना आना है उतना हाइट तो अभी भी आया नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि उसका हाइट बहुत कम है, हाइट है, वेट भी अच्छा है. ये क्यों हुआ? क्योंकि शुरू में जो है उसका जो भी ग्रोथ स्प्रुट है, वो जो इन्फेंसी में होता है, प्री स्कूल ईयर में होता है, वो सब सही था, बट बाद वाला जो ग्रोथ स्प्रुट है जो 9 to 10 ईयर्स में आता है या प्यूबर्टी में आता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, इसलिए जो है
वो जितना अटेन करना है उतना अटेन नहीं कर पाया. Another is compared to the chronological age. Another situation, compared to the chronological age, height is less. Okay, 10 साल का बच्चा है, 10 साल में कितना हाइट होना है उतना नहीं है. बट वेट इज मोर व्हेन कंपेयर टू हाइट. बट वेट को आप देखेंगे तो हाइट के हिसाब से वेट बहुत ज़्यादा है. अगेन दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, दिस कुड बी एन एंडोक्राइनल डिसऑर्डर. हाइट इज मोर, वेट इज मोर, हाइट इज लेस. बट दिस कैनॉट बी ए क्रॉनिक सिस्टमिक डिसऑर्डर. क्रॉनिक सिस्टमिक डिसऑर्डर है तो हाइट और वेट दोनों कम होना चाहिए था, और हाइट ज़्यादा कम हो जाएगा, वेट थोड़ा कम हो जाएगा, और हाइट के हिसाब से वेट और ज़्यादा कम है. ओके, सपोज इफ द वेट ऑफ द चाइल्ड इज मोर देन द क्रोनोलॉजिकल एज. इफ द वेट ऑफ द चाइल्ड इज मोर देन द क्रोनोलॉजिकल एज. 10 साल से, मानो स्टैंडर्ड ले लो 10 साल से उसका वेट जो है 10 साल के हिसाब से ज़्यादा है. एंड हाइट इज ऑल्सो मोर, हाइट भी जो है 10 साल के हिसाब से ज़्यादा है. एंड दिस इज कॉल्ड ओबेसिटी. Okay, where height and weight both are getting increased, that is obesity. Only height is increased, weight is increased, height is not increased, that is endocrine problem. Okay, height and weight both are reduced, but weight is reduced more than the height. Okay, that is malnutrition, acute. Okay, and if the height is reduced more than the weight, okay, that is chronic malnutrition. Anyway. लास्ट वन, हाइट इज मोर देन द क्रोनोलॉजिकल एज. एक और सिचुएशन है, हाइट इज मोर देन द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द वेट इज इवन मोर. हाइट भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, कौन सा, वेट भी ज़्यादा है. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सोजिनस और न्यूट्रिशनल ओबेसिटी. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइनल ओबेसिटी एंड न्यूट्रिशनल ओबेसिटी. एंडोक्राइनल ओबेसिटी जो आपका आएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, वहाँ पे सब आएगा. ठीक है, सो वहाँ पे क्या है, वेट बहुत ज़्यादा है, हाइट उसके हिसाब से कम है. बट एक्सोजिनस ओबेसिटी में हाइट भी ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा है, और इवन वेट हाइट से और ज़्यादा है. ओके, दिस इज वन थिंग. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी some of the important causes of short stature. Thank you very much.